is the WIP, that is the work in process. Having inventory is a sign of inefficiency, that how much actually is in your stock. Sometimes we are having two basic inventory models. One is called as deterministic inventory level. Hello friends, welcome back. Today I am going to discuss with you one topic, very important topic rather, for engineering services examination, called as inventory control. Even though this particular topic is in the core subject of mechanical engineering, but initial portion is quite important from the GS part of this engineering services stream, right? If you have gone through the previous year's question papers, last year or I think this year, one question appeared from this particular section. So initially in this particular video, I'm going to discuss with you about the basics of the inventory control. And then in the next video, it will be a numerical part. And in that video, I will also discuss with you that particular question which was appeared in this engineering services examination, right? Okay, so let's start with the knowing that what inventory is. Right, when we say inventory, inventory is simply a stock of goods. Stock of goods means if you are having something which you have kept in your store, which you intend to use at some period later on, तो उसको हमने नाम दे दिया है इन्वेंट्री. सिंपल टर्म में दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर चीज या गुड्स या सामान जो विच यू हैव केप्ट अपने पास रखा है और जिसको आप बाद में यूटिलाइज करना चाहते हैं फॉर एनी यूजफुल एक्टिविटी, तो उसको नाम दे दिया हमने इन्वेंट्री, राइट? Now, when we say from the industrial point of view, inventory is basically, it could be either like raw material, or it could be like semi-finished product, or it could be like finished product also. For example, as you know, when I have to produce a particular part, in that case, to produce that part, I need raw material, right? So, when I need a raw material, I will purchase it from someone. So, when I purchase it from someone, I am going to keep it with myself. So if I am keeping it with myself with a purpose that I will convert this raw material into a useful product, right? So till the point that this particular raw material is with me, that is in my store, then I will say this is a inventory for me, right? Same way, sometimes when this particular material is getting processed, अब आप क्या कर रहे हो, उस raw material को machines के through क्या कर रहे हो, convert कर रहे हो useful product में. So during the processing, हो सकता है वो when it is getting passed from one machine to another, तो बीच में हो सकता है समवेयर इट इज लाइंग एंड इज नॉट बीइंग गेटिंग यूज्ड. कई बार ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग ए मशीन ऑफ पर्टिकुलर कैपेसिटी, लेट अस से ये मशीन है, यहां से पहले क्या करना है, लेट अस से दिस रॉ मटेरियल हैज टू कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मशीन, लेट अस से 1, एंड देन लेटर ऑन इट हैज टू बी प्रोसेस्ड थ्रू द मशीन 2, और लेट अस से जो मशीन 2 है उसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है लेट अस से 10 यूनिट्स पर डे है, से फॉर एग्जांपल, और जो मशीन 1 है उसकी कैपेसिटी है 20 यूनिट्स पर डे. सो इट मींस हो सकता है कि ये जो मशीन 1 है ये सारे के सारे पार्ट्स को प्रोसेस कर दे, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट, सिंस दिस मशीन इज हैविंग लोअर कैपेसिटी, सम ऑफ द पार्ट्स मे लाई ओवर हियर, राइट, एंड दे मे बी वेटिंग फॉर देमसेल्व्स टू बी प्रोसेस्ड इन द मशीन 2. तो हम बोलेंगे जो पार्ट्स यहां पर ड्यूरिंग द प्रोसेस वेट कर रहे हैं, तो उनको हम बोल देंगे दैट इज द सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री. और कई बार इसको हमने नाम भी दिया है, एक स्पेसिफिक नेम है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द WIP, दैट इज द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री. दैट मींस वर्क जो मटेरियल है विच इज इन प्रोसेस, प्रोसेसिंग के दौरान जो है वो कहीं पर पड़ा हुआ है, इफ इट इज गेटिंग स्टोर्ड, देन उसको नाम दे दिया हमने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, राइट? देन देयर इज वन मोर फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल कॉल्ड एज फिनिश्ड इन्वेंट्री. अब आपने किया रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड प्रोडक्ट में. So it is not that whenever you are producing the finished product as it is, ये पूरा पूरा जो है ऐसा नहीं है कि consume हो जाता है immediately. So either it may lie at your stock for some time before it is getting consumed, right, or before it is getting purchased by someone. तो उसको नाम दे दिया हमने finished product. For example, अगर आपने example लेना है, you can have like a car manufacturer है, उसने cars को produce किया. So for some time before dispatching, they will keep it with themselves. अपने पास रखेंगे, right? बिफोर डिस्पैचिंग, तो तब भी हम बोलेंगे इट इज ए फिनिश्ड इन्वेंटरी. या ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आफ्टर डिस्पैचिंग इट गोज टू द, जो कार्स हैं आपकी डीलर्स के पास जाएंगी, और डीलर्स के पास भी जब जाएगी तो इट डज नॉट मीन कि डीलर्स जो है वो सारी की सारी कार्स को इमीडिएटली जो है वो सेल कर देगा. सो इट मे लाई विद द डीलर, उसके जो स्टॉक यार्ड में या उसके वेयर हाउस में जो है वो लाई करेंगी. तो हम बोलेंगे दैट दिस इज ए फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री,
राइट। सो इन्वेंट्री कुड बी इन एनी फॉर्म, किसी भी इन तीन फॉर्म्स में जो लाई कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन एट व्हाट स्टेज वो प्रोडक्ट जो है या पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो है, राइट। दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, राइट। सो इट्स सेम वे, लाइक घर में भी अगर जैसे आप बात करो, इन्वेंट्री की बात करते हैं तो घर में भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना बनाना है, खाना खाने के लिए आपने सामान खरीदा, सो आप क्या करते हो, परचेज करते हो मटेरियल को रिलेटेड टू सारा सामान खाने के लिए। सो क्या करते हो, यू कीप इट इन योर स्टोर, ठीक है, एंड फर्दर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है आप उसको जो है बनाते रहते हो। सो बेसिकली वो भी आपके लिए क्या है, दैट इज ऑल्सो ए इन्वेंट्री फॉर यू, आपके घर में पड़ी है वो, दैट इज ए इन्वेंट्री फॉर यू, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस that why inventory is required, inventory क्यों चाहिए आपको, that is the question that you need to answer first, right? So if we see in the, अगर घर के context में देखें कि आप ये बोलो कि सामान आपने जो है घर में क्यों लेके रखा है पहला ज्यादा, फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया और रख दिया, राइट। सो एक तो ये है कि डे टू डे एक्टिविटी में जो आपका जो है रेगुलर है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो डिमांड जो है मीट हो जाए, वन ऑफ दिस थिंग। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपके पास किसी गेस्ट आ जाते हैं, ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं, सो इफ यू हैव द इन्वेंट्री, अगर स्टॉक में हाई है आपके पास वो मटेरियल, तो क्या होगा, सो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में दैट विल, वो क्या करेगा, आपकी मदद करेगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब सडन डिमांड जो आपकी राइज हो जाएगी, राइट। सेम थिंग एग्जिस्ट व्हेन यू सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप। इंडस्ट्री में भी जब हम जो इन्वेंट्री की बात करते हैं तो सेम ही कंसेप्ट आपका जो अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल वी से इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन, राइट। लेट अस से if you are a car manufacturer, what you need different spare parts। आप कार मैन्युफैक्चरर हो, आप क्या करोगे, मोस्टली यू आर गोइंग टू असेंबल, आपके पास डिफरेंट पार्ट्स, टायर है कोई और बना रहा है, लेट अस से जो बॉडी पार्ट है कोई और बना रहा है, जो आपका स्टीयरिंग है कोई और बना रहा है, राइट। सो ऑल दो सप्लायर्स आर गिविंग दिस मटेरियल टू यू, राइट, एंड आपने करना उसको असेंबल करना टू मेक ए कार। सो अगर आप चाहते हो कि स्मूथली आपकी जो प्रोडक्शन चले, कहीं भी बीच में इंटरप्शन, जब आपको रिक्वायरमेंट है टायर की, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास टायर है, जब स्टीयरिंग की रिक्वायरमेंट है, स्टीयरिंग है इन सफिशिएंट क्वांटिटी, तो वो जो स्मूथ प्रोडक्शन है आपकी चले, तो उसके लिए आपको क्या है, जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट बोल सकते हो, या जो जिसने सप्लाई किया उसके लिए फिनिश हो सकता है, आपके लिए हो सकता है वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो। सो इन दैट केस अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्शन स्मूथली चले, ये सेम एग्जांपल जैसे मैंने घर में दिया, आपका डे टू डे एक्टिविटी में आपकी जो है खाना जो है रेगुलरली प्रॉपर तरीके से बने, तो आपके पास मटेरियल है सारा का सारा कि नहीं, सो अगर होगा तो आपका स्मूथली चलेगा। सेम थिंग हैपेंस विद योर इंडस्ट्रियल सेटअप आल्सो, राइट। तो स्मूथ फ्लो के लिए, कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए आपको जो है वो, दैट इज यू नीड टू हैव ए इन्वेंट्री। देन टू मीट द एंटीसिपेटेड और सडन डिमांड, राइट, अगेन सेम कंसेप्ट है, जो एग्जांपल मैंने दिया घर का, उसमें यह है कि आपके गेस्ट आ गए सडनली विच यू हैड नॉट एक्सपेक्टेड बट दे केम, एंड इफ यू आर हैविंग इन्वेंट्री इन योर स्टोर, अगर आपके पास स्टॉक था आपके उसमें बोल सकते हो आपके स्टोर रूम में, सो यू कुड यूटिलाइज इट इजीली एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। बट सेम थिंग हैपेंस अगर लेट अस से, अगर आपका लेट अस से आप कार मैन्युफैक्चरर हो और सडनली जो है उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए डिमांड आ जाती है, सो until unless you have in access in your store warehouse, रॉ मटेरियल से लेके सेमी फिनिश से लेके, इफ एवरीथिंग यू आर हैविंग इन एक्सेस, अगर आपने रखा है, तो क्या हो सकता है, वो सडन डिमांड है विच यू हैड नॉट एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड मतलब सडन, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी पर सडनली अराइज होगी, उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटेड डिमांड। तो ऐसी अगर कोई डिमांड आ जाती है तो यू विल बी इन पोजीशन टू मीट दैट डिमांड, राइट। दैट इज टू योर एडवांटेज, बेसिकली यू आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो उस सिचुएशन में भी आपकी इन्वेंट्री जो है वो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। देन वन मोर थिंग इज टू गार्ड अगेंस्ट द इल प्लानिंग। इल प्लानिंग का मतलब हुआ कि आपने जो है गलत प्लानिंग की, you have not done the properly planned from the material। See, when we talk from the industrial point of view, there are, अगर कार का ही एग्जांपल हम लें, there are thousands and thousands of parts which are required to make a particular car। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप you need a steering कोई और बना रहा है, टायर कोई और बना रहा है, राइट। यू आर हैविंग लाइक बाकी जो उसके पार्ट्स है, डैशबोर्ड है कोई और बना रहा है, इंजन है कोई और बना रहा है। सो स्टील के जो बाकी पार्ट्स लगे हुए हैं उस बॉडी में जो है वो कोई बहुत ही, उससे आपने यू हैव मेड दोस पर्टिकुलर बॉडी जो बाहर से आपको दिखती है फ्रॉम सो मेनी स्टील शीट्स। तो हर जो सो मेनी थिंग्स हैं वो आप क्या कर रहे हो, द थाउजेंड पार्ट्स जो हैं आपके, बिकॉज यू हैव टू डू द वेरी मेटिकुलस प्लानिंग फॉर दैट। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, आपने गलती कर दी है, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज, लेट अस से आपने जो है प्लानिंग जो है बाकी सब पार्ट्स के लिए अच्छे से की है, बट लेट अस से आपने एक टायर शॉर्ट पड़ रहा है, कैन यू मैन्युफैक्चर ए कार, कैन यू असेंबल ए कार? नो, यू कैन नॉट डू दैट। सेम थिंग हैपेंस फॉर एग्जांपल कोई और पार्ट है। सो अनटिल एंड अनलेस
आप जो है सारे के सारे जो पार्ट्स जो रिक्वायर्ड हैं उसके लिए, उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, सो इन दैट केस यू कुड हैव ए सिचुएशन ऑफ स्टॉक आउट। स्टॉक आउट मतलब आपके पास जो स्टॉक बचेगा नहीं, एंड देन इन दैट केस योर जो आपका जो प्लांट है वो प्लांट का शटडाउन हो सकता है। सो एंड ऑल्सो बिकॉज if you are a planner, obviously this is a negative point, your negative point, it will get highlighted कि आप जो क्या कर रहे हो when we have kept for you, we have kept you for this particular activity। So उस सिचुएशन में कई बार अगर आप जो है सेफ प्ले करना चाहते हो कि लेट्स से इफ आई एम ए प्लानर, मैं परचेजर हूं, मैंने डिफरेंट पार्ट्स को परचेज करना है, सो उस केस में अगर इफ आई एम नॉट श्योर एनफ कि कहीं मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊं जहां पर जो है वो हो सकता है स्टॉक आउट की सिचुएशन आ जाए, तो मैं क्या कर रहा हूं सेफ साइड के लिए कई बार जो है वो ज्यादा इन्वेंट्री जो है मंगवा लेता हूं, राइट। Even though it is going to have the negative impact that we see, but ill planning को आपने cover up करने के लिए, to guard against the ill planning, you sometimes have to keep the inventory. So these are some of the possible reasons why you need to have an inventory. Let us now discuss one more question, basic question rather, related to the inventory. The question is having inventory is a sign of inefficiency? If we have to answer it simply, the answer will be definitely it's a sign of inefficiency. Why we say so? See, if you are keeping the inventory, first of all, you need to have the inventory only as much as you require for the consumption, right? So if you are having excess stock or more material at your hand, then we can say you have not planned it properly. So if you are not planning it properly, that means you are inefficient in maintaining the inventory, right? So one reason could be this. The other part is you have also invested in those resources, in that material. For example, if you take a case of like household articles, when you go outside and purchase something for your daily use, so if you are purchasing, let us say for a month or 2 months in a single go, then that may be in excess for your consumption, right? It may lie at your end. You have invested a lot amount of money in that. So if you had not purchase that much quantity, so that money you may have utilized somewhere else. First thing is that. The other one is the material that you have bought, you are keeping it somewhere in the store, so that is also occupying your space. But in the industrial setup, if we talk about, when you have to purchase the raw material or semi-finished products, they may be in crores of rupees. So in that case, you can just imagine a lot of money is locked up in that particular this inventory, right? And also, if you see, in addition to it, you are having like in that case storage space which you may have rented, and also to maintain the whole thing you may have some other person and electricity bill and all that. So in that case, your lot of wastage of the resources will be there. So that is why we say that inventory is basically a sign of inefficiency, and we have to try to minimize. So our objective will always be to minimize the level of inventory, right? And also one more point that you can have is that also we are having many tools, modern tools to minimize the inventory. So if we are not making use of those tools, then we can say also that you are inefficient in maintaining the inventory. So now our objective will remain that how we have to, first we need to minimize that level of inventory. That will be our foremost objective. And what are the different approaches, what are the different methods that we need to adopt to minimize the level of inventory. Since our objective will always remain to minimize the inventory, so these are some of the approaches that we can adopt to minimize the level of inventory in our organization, right? So first and foremost is a better planning. As we discussed, ill planning can lead to your inventory or increase in the stocks. So what you do is, if you do the better planning, then obviously you can minimize the level of inventory, and therefore this will be one of the best approach you can say. Then another method is the continuous monitoring of the stocks. See, in industry you are having many parts, so until and unless you will frequently check whether your stocks, that how much actually is in your stock. Sometimes it may happen that you may have wrongly calculated the things, and once you have wrongly calculated, obviously the requirement that you are going to place for the requirement of those parts will be more. So in that case you could have more stocks. So what you do is, if you will frequently, अगर बार बार जाके अगर आप स्टॉक्स को जो है कंटिन्यूस बेसिस पे अपने स्टॉक्स को चेक करते रहोगे, यू विल हैव द एक्चुअल फिगर इन योर हैंड दैट ओके, दिस इज द inventory that I am having, or this much is stock left out right now. So based upon that, accordingly you can make the better planning. So this is very important from the perspective of minimizing the level of inventory. And one more thing is the reliable vendors.
So vendors, I think you need to understand the meaning of vendors. So there are two terms. One is called as supplier, the other one is vendor. So for example, let us say if I'm a particular car maker or maybe any manufacturer. So let us say you're a car maker. So for car maker, there could be number of suppliers. Suppliers of raw material, for example. So here you could have many suppliers, or for example, let us say you could have let us say steel. Let us say, so this could be supplier to the car maker. But when we say vendor may be the suppliers who are making some of the parts, or you can say semi-finished parts for this particular car maker, right? So here you could have many vendors who work in a very close association with this particular car maker. So even though, for example, if you say this is a raw material that is being supplied to this car maker, this may be supplied even to the vendors. It may go to the vendors also. But these vendors, what these vendors will do? These vendors will make the parts, same finished parts, and then they will supply it to the car maker. This is how it is. So basically, there are many parts, as I told you, in the car, in making a car. So car maker by themselves cannot make all those parts. So what they do normally do is they sublet it, right? They ask some supplier, or we call it as a vendor, to make some of those parts, and then once they will make and give it to the car maker, then car maker will simply assemble those parts, right? So it means car maker's performance or inventory depends largely upon the vendors. So vendors, if for example, if you have the reliable vendors, then in that case you will have the exact. Reliable का मतलब है कि आपके पास जो वेंडर्स है उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन बहुत एप्रोप्रिएट आती है, प्रॉपर आती है, so you can have trust on them. So if you don't have trust on them, obviously then you will have the trouble. So normally what you do is car maker has to make little more effort in building the relationship with these vendors, so that you have more exact information in your hand related to everything, whether it is related to the parts that they have made for the car maker, right, or related to the stock that they are having, raw material stock. For example, they have supplied the stock raw material to them. So how much exactly is the raw material stock they are having in their hand? So if you are having reliable vendors, in that case, your planning will be effective and you will be able to minimize the inventory. And this is the practical difficulty that normally these manufacturers will face if they don't have the reliable vendors, right? Then you have the one more method is like using the concepts of like just in time, right? So these are the concepts that you may have gone through our videos. We have already released recently one video on just in time, where it has been explained in detail what the concept of just in time is. Just in time, as you know, is the that you should have the material in hand only when it is required, right? So that concept you can just go through that video in detail, that how you can minimize the inventory. So whenever we talk about the inventory control means maintaining the level of inventory. So normally we are going to talk about the optimum level of inventory, right? So most of the time when we talk about this, we are going to ask two questions, that how much quantity I should order at any particular point of time. Let us say I want to purchase a quantity for my consumption. Then at any particular point of time, how much should I order or how much should I have, right? So how much quantity I should order at a particular point of time. So that is one question that I need to answer. The second one is the when. That means at what interval. So normally whenever we are going to discuss about this inventory control related issues, we are frequently going to ask these questions, that how much I have to order and how frequently or when I need to order those quantity. So while dealing controlling the inventory levels, normally what we do is we try to prepare the mathematical models for the inventory control. So what are those basic inventory models? So we are having two basic inventory models. One is called a deterministic inventory level and the other one is the probabilistic inventory level. Deterministic inventory levels means that demand is known with certainty. You already know the demand, that okay, this much amount of units will be consumed in a year or a month. So you know the demand, and based upon that demand you will try to decide that how much you are going to order and when you are going to order, right? So when demand is known, that means
It means for a given particular period of time, whether it is a month or a year. So that will be called as deterministic inventory models. And again, once you know the demand with certainty, then you will try to answer these two questions, that how much to order and when to order. Same way, probabilistic inventory models, that means when you don't know the demand with certainty, you don't know that how much will be the demand in a year. So if you don't know the demand exactly in a year, then you will not be able to purchase the right amount of quantity, that how much I should purchase and when to purchase. So in that case, we are going to make use of the probabilistic concepts to estimate when to order and how much to order, right? So these two mathematical models we are going to discuss. But see, if we talk about from the engineering services perspective, last year the question was framed from the deterministic model, and that is a very basic deterministic model called as economic order quantity model, right? So that model we are going to discuss in the next video, but this forms the basis for that particular model. So whatever we discuss in this video is very important from the engineering services general studies paper perspective. So question can be framed in any way, even though we are going to give you some questions for the practice in this particular material that we are going to provide you. But just go carefully the basic concepts of the inventory control. Last year they had asked the question, numerical question, that we will definitely do, but theoretical based question can definitely be framed. So please go carefully and practice the question that we will be framing for you.